बता देते हैं लखनऊ से बड़ी खबर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की प्रेस वार्ता। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर चली है कांग्रेस। राजीव गांधी के बनाए रास्ते पर अब राहुल की न्याय यात्रा से पूर्व भारत जोड़ो यात्रा से देश जागा। वर्तमान सरकार के कई निर्णय सरकार के खिलाफ। महंगाई बढ़ी, लोगों को रोजगार नहीं मिला। झूठी गारंटी की बात कर रही है वर्तमान सरकार। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने गारंटी काट दिया। लखनऊ से खबर, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए और साथ ही कहा कि महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चल रही है कांग्रेस। राजीव गांधी के बनाए रास्ते पर अब राहुल की न्याय यात्रा गुजर रही है। न्याय यात्रा से पूर्व भारत जोड़ो यात्रा से देश जागा है। वर्तमान सरकार के कई निर्णय जनता के खिलाफ। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने गारंटी कार्ड दिए हैं। वर्तमान सरकार के कई निर्णय जनता के खिलाफ। महंगाई बढ़ी, लोगों को रोजगार नहीं मिला। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने दिए गारंटी कार्ड। वर्तमान सरकार के कई निर्णय जनता के खिलाफ। महंगाई बढ़ी, लोगों को रोजगार नहीं मिला। न्याय यात्रा से पूर्व वर्तमान सरकार के कई निर्णय जनता के खिलाफ। झूठी गारंटी की बात कर रही है वर्तमान सरकार। सरकार बनने पर कैबिनेट में बड़े फैसले होंगे। कर्नाटक में एम्फीबियस यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। महंगाई बढ़ी, झूठी गारंटी की बात कर रही है वर्तमान सरकार। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य की महिलाओं को फ्री सरकारी बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। यात्रा के लिए सरकार बनने पर कैबिनेट में बड़े फैसले होंगे। कर्नाटक में एम्फीबियस यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। My working president and the parliament member of Rajya Sabha from Karnataka, Mr. G. Chandrasekhar, and all my media friends from all over the country and especially from Lucknow. I know that Lucknow media is a very strong media. It has its own history, and you have been a
messenger for the entire country and the world. I am very thankful to the PCC of Lucknow, UP, to give an opportunity to meet all of you. As rightly said by my friend, first I would like to tell you that with the people of Blessings of Karnataka, under my leadership as a party president, I think you all are speaking. I think better I stop, let you finish your speak. If you maintain patience, I can speak something, which shall be very free. With lot of blessing from the people of Karnataka, we jointly worked. Mahatma Gandhi ji took out, was the president from Karnataka in 1924. From the same place, we started our Prajadhwani Yatra. From the first day of the Yatra, with keeping Mr. Mallikarjun Kharge, the ACC president, I announced the first guarantee of Gruha Jyoti. That Gruha Jyoti is 200 units of free power to everyone. Then we announced a guarantee of Srimati Priyanka Gandhi came to Bangalore. After Rahul Gandhi walked the streets of this country, he could see that the biggest problem in this country is the unemployment, the price rise, the hatredness, and the problems of the farmers. Farmers are not getting their due rights and the price which they have to get. So ultimately, after this Prajadhwani Yatra, we all decided, and the Bharat Jodo Yatra, we all decided that we have to help the people of this state and send a message to the country. Ultimately, we invited Priyanka Gandhi to come to Bangalore, and one Na-Nayaki, that means a woman, you are the leader. Whoever is she is a leader by herself, in the house or anywhere. We have to straighten her. So one program after Gruha Jyoti, lighting the lamp, Guru Lakshmi was being formed. So we decided to help the farmer, to help the woman, because her gas price from 440 rupees to 1,100 rupees, it has raised. Lot of essential commodities she could not bear. Lot of things, lot of prices were being on the high and their income were on the bottom. So somehow we wanted to help them. So Priyanka Gandhi said, DK, for me and Sidramaya, in this election time, parties make promises. BJP government also gave a lot of promises. They said that they are going to double the income of the farmers. They said that they will double the income. They said that they will bring the black money and distribute to the common man through Jan Dhan account. They said that they will give employment, but they did not give employment.